Okay, so day 65 and today we'll be solving this problem, student attendance record part 2. So इस question में there's an attendance record and there are three entries, absent, late and present. So uh, a student is eligible for an attendance award if they meet both of the following criteria. The first is the student was absent for strictly fewer than 2 days total, that is either 0 days or for just 1 day he was absent, and the student was never late or like for 3 or more consecutive days. Like consecutive is the important factor here. And then you are given an integer n, which is actually the number of days, and तुम्हें बताना है कि return the number of possible attendance records. So for example, अगर n 2 है, so if you look at these attendance records, these all deserve award because they all come under this particular criteria. ठीक है, like you won't find किसी एक में जिसमें absent 2 बार हो रहा है, या फिर जो लेट वाला रिकॉर्ड है वो 3 टाइम्स consecutive आ रहा है. सो तुम्हें बताना है ऐसे टोटल कितने डेज है. सो एंड तुम्हें लाइक इन दी एंड यू हैव टू गिव लाइक रिटर्न इट वाया मॉड्यूलो. सो अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, लाइक एन इज़ 1E5, बट ये जो दो कंस्ट्रेंट्स है, लाइक ए शुड बी स्ट्रिक्टली फ्यूअर देन 2 days एंड नेवर लेट फॉर 3 or more consecutive days, that you can keep a state. So what I'm saying is you can just brute force the recursion over here, which is just take these indexes, which is like these states basically, and like pehla would be the index, that is the current day, and n like the total number of days. Absent अब तक लिया है या नहीं, because you know that absent can be less than 2 days only. तो 1 is the max amount of time he can take the absent, like he can take an absent entry. That's why इसको boolean डाल दिया कि उसने अब तक लिया है या नहीं लिया है, and अब तक कितना consecutively he was late. So first state is simple, like we would be giving him the present, like we would be giving him the present entry, like he's present that day. And what that means is you can go to the other day, absent taken जो अब तक आ रहा था वही रहेगा, and late अगर चल भी रहा था तो 0 से रीसेट हो जाएगा, क्योंकि हमने consecutive days वाला सीरीज ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमने उस दिन को present असाइन कर दिया. Second step is new late, that is तुमने like you decided कि I would mark the person as late that day, and again index +1. एबसेंट टेकन वही रहेगा, क्योंकि एबसेंट टेकन लाइक अब तक एबसेंट का कुछ बात नहीं आया, तो जो अब तक हमारे पास एबसेंट आ रहा था वही कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड लेट +1 हो जाएगा. सो हर एंड लाइक हर रिकर्जन स्टेट में यू सी आई एम चेकिंग इफ लेट इज़ नॉट इक्वल टू 2, देन ओनली आई एम डूइंग अ +1. ठीक है. देन द लास्ट स्टेप, इफ प्रीवियसली एबसेंट, लाइक यू हैव टू असाइन, लाइक यू हैव टू गिव द एबसेंट एंट्री, एंड यू कैन ओनली डू दैट अगर उसने अब तक एबसेंट नहीं लिया है, एंड यू विल सॉल्व फॉर दैट. सो देर आर थ्री थिंग्स वी आर डूइंग. लेट एंड एबसेंट के लिए एज यू कैन सी हमें कंडीशंस दिया था, तो उसके लिए हमने चेक्स लगाए हैं, ये दो चेक्स, एंड देन इन द एंड यू विल जस्ट ऐड ऑल दी आंसर्स एंड यू विल रिटर्न दैट. एंड इन सब को ऑप्टिमाइज करने के लिए, बिकॉज देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो भी सब प्रॉब्लम्स है दे वुड रिपीट देमसेल्व्स, सो हमने यहाँ पे डी पी लाइक वी डिड अ सिंपल मेमोराइजेशन, एंड अगर इंडेक्स जैसी इज़ ग्रेटर देन एन वी रिटर्न अ 1. सो मेमोराइजेशन वॉज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि if you can see this is always under your bounds, like it's like this will not give you memory limit exceeded. So a simple problem, but just a hint that you can take things as arguments, and you can maintain them as your dp states if they are very less. So